I did some theatre when I was from the ages of 10 to 14, which is and I had a very dangerous audience, mostly involving parents. So a lot of it, I thought I was a really brilliant actor, and we performed in Tihar jail. So there, I think one play in a decade arrives. So we got a lot of appreciation. We all walked out of there thinking that we were great, and after that, I haven't done anything. So in theatre, I played a bird or something in one. I was a bird with Barry John. You know, he did a play called Harun and the Sea of Stories where he typecast me as a cockatoo or something. I was a cockatoo, so yeah. I'm the banner for theatre here. It's terrible. I'm like the first bencher. It's horrible. Atul keeps saying, see, Kalki has done theatre, so I don't need to tell her. Kalki has done theatre, da 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 da. So I'm one of those, students that everybody hates because, they're sitting right in the first row. But no, I've done some theatre. I studied theatre, and I don't know. I don't think it's something that, it's just, for me, it's just like exciting to come back to theatre because it's so spontaneous. You're in front of your audience, and you've got to constantly like change your act to suit the audience. So it makes you react a lot more to things around you. That's it, yeah. I enjoy it. I know how I was working. I had 2-3 months off in the middle. So I told Kalki that I'm getting very rubbish film scripts. What should I do? So she put in a word to Atul, and Atul called me, and I wanted to work with him for a long time. So we had that time to devote 2-3 months to rehearsals, and then now the touring is started. So we just keep doing, fine tuning instead of everyday rehearsals. We are past that stage, but. Maybe you should ask him, he's the director. We rehearsed for about a month and a half. We have a small theatre residency outside Bombay, and so I packed all of them in a car and I took them there so they couldn't go off their shoots. So I closed them in a little bit of a, like in a Tihar, as you said. So they couldn't come back to Bombay. We rehearsed we were living together and rehearsing in the beginning. And then we were rehearsing in Bombay, but yeah, they've been on and off, going off to do other things, but we rehearsed for 1.5 months roughly. और डार्क भी है, एंड में ट्विस्ट्स है हर कहानी में, और ये प्ले में 9 कहानियाँ हैं और हम सब अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. मैं 5 अलग कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ और हर कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है. एक है एक बहुत ही शर्माली वाली लड़की, एक दूसरा है एक ओल्डर लेडी जो पोएट है, एंड फिर एक लड़का भी प्ले कर रही हूँ इसमें, एक यंग सेल्समैन जो बहुत हाइपर एनर्जेटिक है. तो बहुत ही बहुत मस्त वाली प्ले है. हाँ, बहुत अलग है. मैं थिएटर शुरू से कर रही हूँ. मैं 2-3 और प्लेस भी करती हूँ. कलर ब्लाइंड कर रही हूँ और हैमलेट 5 साल से हैमलेट कर रही हूँ. तो थिएटर कुछ नया नहीं है मेरे लिए. बस मुझे बहुत अच्छा लगता है टू गो बैक टू थिएटर. वो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है. आई लर्न हाउ टू train my voice, my diction, my physical body. It's really important for me. और फिल्म्स करती रहती हूँ और टाइम तो है दोनों करने के लिए, तो क्यों नहीं करूँ. 9 एक्ट मैं नहीं कर रही, सिर्फ पूरे नाटक में 9 छोटी कहानियाँ हैं, उनमें से 4 मैं कर रही हूँ. और फिल्में तो मैं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी और इसके साथ साथ भी कर रही हूँ. पर थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो एक्टर्स को ज़्यादा बेहतर बनाता है, इसलिए मैंने सोचा कि नाटक करते रहना चाहिए. टफ़ तो था क्योंकि फिल्मों के साथ मैनेज करना टफ़ होता है, टाइम, ट्रैवल एक्सेट्रा. पर अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत रिवॉर्डिंग चीज़ है. तो मैं चाहूँगी कि जितने भी यंग एक्टर्स हैं जो अभी इंडस्ट्री में आए हैं वो थिएटर को भी तवज्जो दें ताकि थिएटर भी बढ़े और फिल्में भी बेहतर हों, क्योंकि थिएटर करने से एक्टर बेहतर होते हैं.